ओके, सो हेलो इन्वेस्टर्स। क्या आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है? आज मैं जो स्टॉक की बात करने वाला हूँ ये एकदम स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रहा है। 30 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा डबलिंग इन नेक्स्ट 2 years, EPS ट्रिपलिंग इन नेक्स्ट 3 years, कैपेसिटी डबलिंग इन नेक्स्ट 3 to 4 years. So what I'm talking about a hospital chain by the name of Yatharth Hospital. सो इस कंपनी का मार्केट कैप अभी क्लोज टू 7500 करोड़ है। वेरी हाई रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेइंग आउट एबिटा एंड ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये अभी ट्रेड कर रहा है क्लोज टू 25 टाइम्स ईवी टू एबिटा, विच इज़ लोअर देन अदर हॉस्पिटल स्टॉक्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियोस, जैसे कि किम्स, मेदांता, अपोलो। ये सब मोर देन 30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। तो ये स्टॉक चीप भी है, growth भी explosive है. So should we just go and buy it? Well, let's not hurry and listen, and you should listen me out for the next 5 to 7 minutes to figure out whether this is a gold mine या फिर ये एक value trap है. So just like I do every time, first understand ये कंपनी क्या है and यहाँ तक कैसे आई. But before that, just a SEBI disclosure. I am not a SEBI registered investment advisor and this is not investment advice. I just like to share my research and that's what I'm doing. Okay. So Yatharth Hospital is a super specialty hospital which has more than 2500 bed capacity today. If we compare this with other hospitals like Apollo, which is like highest in India with more than 8000 operating beds, and Kims and Max which have slightly more than 5000. तो इस कंपनी से कंपेयर करें तो उनका भी बेड कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल है देन यथार्थ. But global health, which I discussed last week, has slightly more than 2500 beds, so is comparable to this company from bed capacity wise. But दोनों में लाइक मेदांता एंड यथार्थ में वैसे बहुत डिफरेंस है. मेदांता caters the rich and affluent and this company focuses more on tier 2 patients, which is visible in their ARPOB, where Medanta ARPOB is more than double that of Yatharth. But interesting point to note is that Medanta has 30,000 market cap and Yatharth has close to 7500 crores. One more point to note out is like any other hospital chain, bed capacity expansion. Like any other hospital chain, this company has also expanded its bed capacity at a very fast pace and ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. To give you some more perspective, this hospital chain had 650 beds in March 2020, March 19. And then they started the growth trajectory. 450 beds added through Noida Extension Hospital in May 2019, then another 300 in Jhansi Hospital, then 200 in Faridabad in 2024, and then recently 300 beds in Delhi and 400 beds in Greater Faridabad, making them the largest hospital operator in Faridabad region. Also in 2026, they did a 250 to 300 bed acquisition in Agra region, which has now been operationalized. If you're adding this up, let me help you out. Now they have close to 3000 beds. साढ़े 600 से 3000 beds. This is the growth they have achieved in last 6 years. Yes, let that sink in. Now, also recently in third quarter call, their chairman, Mr. Yatharth Tyagi, highlighted they plan to go to 5,000 beds in next 3 to 5 years. When you hear these numbers, you must think this company में बहुत ज़्यादा debt होगा, just like Kims, which we talked about 2 weeks back. Well, here's another shocker for you. This is a debt-free company. As of now, इनके ऊपर zero debt है. I mean, पहले थोड़ा debt था, but that is all paid down. Shocking, right? So whenever we talk about any hospital chain, we talk about the bed expansion and then we talk about ARPOB, average revenue per operating bed. So like I previously highlighted, इनके hospitals mostly tier 2 cities में हैं, which means lower income patients and thus lower revenue per patient. That's why इनका ARPOB is half than some of the tier 1 cities focused players like Medanta and Apollo Health. इनका ARPOB is close to 30,000 versus Global Health more than 60,000. जस्ट वन थिंग टू पॉइंट आउट इज दैट इनका जो ये 30,000 का आरपॉब है, ये एक टोटल ब्लेंडेड नंबर है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द हॉस्पिटल्स. तो इनका एक हॉस्पिटल है इन झांसी एरिया जो कि मोस्टली केटर करता है टू द गवर्नमेंट पेशेंट्स. नाउ एज गवर्नमेंट पेशेंट्स हैव लोअर रेवेन्यू, उसकी वजह से उस हॉस्पिटल का आरपॉब इज क्लोज टू 13,000. उसकी वजह से इनका टोटल नंबर भी डिस्टॉर्ट होकर 30,000 दिखता है. बट अगर अपन इनके मोर सिटी वाले हॉस्पिटल्स को देखें, जैसे कि नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा, उनका आरपॉब क्लोज टू 40,000 है. लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी.
So to give brief history, this company has been growing its revenue at 40% CAGR since last 5 years and has increased EBITDA almost 3 times from 65 crores to 220 crores. अब अगर अपन इनके recent performance का बात करें तो till December यानी कि 3 quarters of this year इस कंपनी ने अपना revenue 32% बढ़ाया है versus last year and chairman ने clearly बोला है that 4Q will be even better. EBITDA margins, just like any other hospital, have declined from 25% to 24% because as new hospitals ramp up, शुरू से कुछ कॉस्ट लगती है बट पेशेंट स्लोली आते हैं, thus एक बार EBITDA margins dilute होते हैं. But good thing here is management has guided that margins will be back to normal levels soon. Another point to highlight from recent conversations from management is they have guided that current government payer mix is close to 35%, which will slowly reduce to 25%, which is a good thing, right? Government pays lowest. So lower government exposure means higher revenue per patient and higher profitability. One more interesting thing is that they have guided sustainable 10% RPOB increase. Now, why this is interesting is because if you look at other hospitals like Medanta or Apollo, they have guided that their sustainable long-term growth rate of RPOB is 5 to 7% versus this company's guidance of 10%, which my take is that due to their lower base, they have lot of headroom for the RPOB expansion. Also, one good news which they shared is that during the latest call is that their IT issue, the income tax issue which they were facing has now been fully resolved. टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, तो इनकी ग्रोथ 3 पिलर्स पे टिकी है. नंबर 1, इंक्रीज इन बेड कैपेसिटी. जैसे कि मैंने बताया दे हैव क्लोज टू 2500 बेड्स एंड दे प्लान टू गो टू 5000 बेड्स इन नेक्स्ट 3 to 4 years. Second pillar is RPOB expansion. So as management has guided, they expect their RPOB to increase 10% each year. So that simply means 10% increase in revenue from RPOB itself. And third pillar is occupancy increase in newer hospitals. So as I was talking about earlier, जब अपन एक नया हॉस्पिटल खोलते हैं तो पेशेंट स्लोली आने लगते हैं. सो जो कि इनके न्यू हॉस्पिटल्स है, ग्रेटर फरीदाबाद वाला या दिल्ली वाला या फिर आगरा वाला या फिर जो ये अब और भी नए हॉस्पिटल्स खोलने वाले हैं 27-28 में, तो उसमें भी कैपेसिटी उसमें भी ऑक्यूपेंसी एक्सपेंशन होगा और उसकी वजह से भी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी. सो इंक्रीज इन बेड कैपेसिटी, आरपॉब एक्सपेंशन एंड ऑक्यूपेंसी इंक्रीज इन न्यूअर हॉस्पिटल्स, ये 3 ग्रोथ पिलर्स हैं जिसपे ये कंपनी की ग्रोथ है. वैसे तो मैंने इस कंपनी का प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल बनाया है बट आई विल जस्ट शेयर द कंक्लूजन्स विथ यू. So because of the above reasons, revenue should double in next 5 years with revenue increase CAGR of close to 15%. Now जब revenue बढ़ेगा तो EBITDA भी बढ़ेगा. But just because इनका EBITDA margin already on the higher end of the guidance है, that is close to 25%, मैंने EBITDA margin growth expect नहीं किया है. But because revenue double हो रहा है, so EBITDA will at least double from here. Okay, another thing I will talk about is risk because nothing is like proper clean. So basically the risk which I see in this company, some are industry specific like हर hospital stock में होते हैं, and then 1-2 risk which are specific to this company. So regulatory risk, as we know that healthcare is associated with people, like people care. So government कभी भी votes के लिए या फिर just for the care of people इस industry में कभी भी regulations ला सकती है जिससे इस company का revenue या profitability impact हो सकती है. Another risk जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं is over capacity risk. Now not only Yatharth Hospital, आप कोई भी हॉस्पिटल ले लो, everybody is doing very aggressive expansion. Now because they are doing aggressive expansion, there is a chance that बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हो जाएंगे एंड उसकी वजह से इन हॉस्पिटल्स को अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी या फिर इनकी ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगी. आई डोंट सी दैट एज अ रिस्क क्योंकि इंडिया में अभी गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है. Another risk which could be with this company is execution risk. Now when you are expanding your business, not only hospitals, any business, there is a risk कि उस expansion को करते वक्त कुछ problems आ जाए, पैसे का प्रॉब्लम आ जाए या फिर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाए, एनीथिंग लाइक दैट. सो वो रिस्क ऑफ कोर्स रहेगा किसी भी कंपनी में जो एक्सपेंशन प्लान कर रही है. अनदर रिस्क इज मार्जिन ड्रैग. जैसे कि मैंने बताया कि इनका मार्जिन 25% से 24% हुआ है इस साल बिकॉज ऑफ द न्यू हॉस्पिटल्स दे आर ओपनिंग अप. प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब दिस मार्जिन कीप्स ऑन ड्रैगिंग एंड कीप्स ऑन गोइंग लोअर बिकॉज ऑफ दिस न्यू हॉस्पिटल्स.
एक रिस्क है जो इस कंपनी को स्पेसिफिक है, विच इज़ जोग्राफिक कंसंट्रेशन। सो इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद। सो बेसिकली सारे हॉस्पिटल्स एनसीआर में है, सो देर इज जोग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क। अनदर रिस्क विच आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड कॉल इट आउट इज दैट इनका स्मॉल साइज है। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 2,500 बेड्स, smaller ARPOB than other company like Medanta. So they have a smaller size, which could be an issue for a capital heavy business. Before we delve into the valuation, let's look at the historical performance of this stock. So since IPO इसका प्राइस 330 से बढ़ के 840 का हाई तक बनाया था अक्टूबर में लास्ट ईयर, मीनिंग अ इम्प्रेसिव 255% रिटर्न इन लास्ट 2 years। बट क्योंकि पूरा मार्केट करेक्ट हुआ पोस्ट दैट, ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से। हाउएवर एज यू कैन सी इन दिस, इसके चार्ट में, इसके प्राइस चार्ट में रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, विद स्टॉक रीचिंग 750 फ्रॉम 550। नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन, सो ये स्टॉक ट्रेड करता है एट ईवी टू एबिटा ऑफ क्लोज टू 25 वर्सेज इफ वी लुक एट एनी अदर हॉस्पिटल स्टॉक विच ट्रेड जनरली क्लोजर टू 30x। नाउ इफ वी लुक एट द स्टोरी ऑफ दिस कंपनी, काफ़ी क्लीन स्टोरी है। ऑनेस्टली आई कुडंट मेक मच सेंस कि ये लोअर ईवी बाय एबिटा पे क्यों ट्रेड करता है। वन रीजन कुड बी दैट इट इज स्मॉल इन साइज, और दूसरा इट केटर्स टू द टीयर 2 मार्केट्स विच आर मोर सिक्लिकल। ऑल्सो इनका जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो मेरे को लगता है इन कुछ रीजंस की वजह से इनका ईवी टू एबिटा थोड़ा कम है। खैर जो भी है, मार्केट इज़ द फाइनल किंग। सो मैंने अपने वैल्यूएशंस में ईवी टू एबिटा 25 टाइम्स ही लिया है। उस हिसाब से अगर अपन इनके 2030 के एबिटा को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें नेट डेट हटाते हैं, सो इस कंपनी के शेयर की वैल्यू क्लोज टू 1750 आती है, विच इज़ अ 129% इंक्रीज फ्रॉम करंट लेवल्स और अ ईयरली रिटर्न ऑफ 23%। प्रिटी इंप्रेसिव राइट। बट एक और चीज़, इफ़ this hospital chain grows and market values it like any other, like other hospital chains like Medanta और किम्स, तो इसका शेयर प्राइस क्लोज टू 2000 भी जा सकता है, which is a pretty good return. But again, just to point out, I am not a SEBI registered investment advisor and this is not an investment advice. You should do your research before making any conclusion. But I hope ये research आपको help करेगी in making a decision. Thanks.